Good morning, everyone. I, Dr. Richie Simon, Assistant Professor, Social Work, take this opportunity to welcome you all to this enriching national webinar on career prospects in CSR, organized by the Department of Social Work, the Bhopal School of Social Sciences. Founded in 2001, the department has a rich history and it focuses on offering graduate and postgraduate programs along with certificate courses. The department emphasizes a holistic learning approach that nurtures critical thinking, leadership, and social responsibility. It focuses on social justice, human rights, and well being, preparing the students for real world challenges with hands on community engagement and ethical leadership. BSSS continues to be at the forefront of academic excellence, equipping students with the skills to make meaningful contributions not only locally but also globally. In this line, we are organizing the national webinar on career prospects in CSR to acquaint the participants with the dynamics of CSR in India. Today's webinar delves into the growing field of corporate social responsibility. CSR has evolved into an essential part of corporate governance, offering career opportunities for social workers, community developers, and professionals across sectors. This session aims to provide you with valuable insights into career paths within CSR, challenges, and growth prospects. With us are distinguished professionals who bring a wealth of experience and knowledge, making the session both enriching and practical. To formally welcome you all to this event, I now invite Dr. Ritvik Gandhi, Head of the Department of Social Work at BSSS. Dr. Gandhi has been an inspirational leader, guiding the department with a vision towards quality education and impactful community service. Sir, over to you. Ritvik, sir. Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah. So, thank you very much, Richie ma'am, the convener of this particular national webinar, which is on career prospects in corporate social responsibility. Whenever we talk about corporate social responsibility, there is always something exciting coming into the minds of especially students of social work. So, and there is students are intrigued quite often about this word term CSR. So, in many ways, we discussed with among our faculty members in the department that it has become like a conundrum. It's like a unsolved puzzle sometimes for students. Okay, what is this CSR all about, and what are the actual objectives of the CSR activities, and more than that, how we can actually encash the opportunities that are available in the CSR domain. So keeping that in mind, the department thought of conducting a national webinar for the benefit of all the student body across the country. And therefore, that's how we actually planned this particular webinar. And we thought of actually inviting young blood deliberately to this particular seminar, because the very idea was to address the queries of the young minds who are actually intrigued by what youthfulness and youths
can they actually contribute into this? So therefore, deliberately we have invited one of our very young alumni, Mr. Hitesh Pamnani, and one of the very young, personalities, Mr. Vikas Kumar, who is from Tata Institute of Social Sciences, passed from TISS, and also right now both of them have deep linkages. They are either dealing with the startups, they are having their own ventures, businesses, and they have a deep linkage with this corporate social responsibility world, right from the beginning of their careers. So I take this opportunity to invite both the speakers, Mr. Vikas Kumar, who has been working right now, who is actually working right now in Bharat Coking Limited, Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad, a subsidiary of Coal India Limited, which is a government company we all know, a Navaratna Maharatna company. And he's basically assistant manager of community development, so looking after all the community initiatives of his company, and has a better idea of how these companies and the government-owned companies or the public sector companies deploy their resources in the name of corporate social responsibility, and how they fulfill their statutory obligations. At the same time, if at all they do some innovations, how they go about it. So I think Vikas can enlighten us about that. And at the same time, we welcome Hitesh, our own dear Hitesh, who passed out from the BSS only and as an undergraduate student. Later on, went to Christ University, passed an MSW from Christ. Right now, has been working with the consulting firms also of the national repute. Recently, has founded his own startup, his own business, and has a social mind, so far as we know, Hitesh. When there were floods in the Kerala, I clearly remember he was one of the distinct social work students who had extraordinary contributed towards the flood relief, and he had gathered, I think, almost a lot of cash and a lot of money and a lot of other gifts in kind from the local neighborhood. So he has been practicing, not only he has that particular degree with him, but he has that fervor and zeal to do something for the people that he has been showing us through his student life only. So welcome, Hitesh, to you also on this webinar as an expert. And I not only hope, but I'm quite positive and confident that both of you are going to share your insights. And from your insights, the entire audience, the student body, and even the faculties also are actually going to be enriched. So with these words, I really welcome on behalf of the department, on behalf of the college, on behalf of the principal, dean, and vice principal of the Bhopal School of Social Sciences, I welcome both of you as a resource person of this seminar, and hope that from this seminar, the participants learn what they expect to learn. Thank you. Over to you, Richi ma'am. Thank you. Thank you, sir, for your warm words and thoughtful insights. It is now my privilege to introduce our first speaker, Mr. Vikas Kumar. Mr. Kumar currently serves as Assistant Manager of Community Development at Bharat Coking Coal Limited, BCCL Dhanbad, a mini Ratna subsidiary of Coal India Limited. He oversees critical land acquisition, rehabilitation, and resettlement initiatives for project-affected communities. His professional journey includes notable roles such as block coordinator for a UNICEF-funded education project in Chabua, Madhya Pradesh, where he focused on capacity building of education officials and strengthening school management committees. Mr. Kumar has also engaged with organizations like Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and worked with the district collector of Palghar, Maharashtra on a bullet train land acquisition project. He holds a master's degree in social work from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, a bachelor's in history from Banaras Hindu University, and is currently pursuing a PhD at IIT ISM Dhanbad. Mr. Kumar is also a junior research fellowship qualifier in social work in the year 2020. Please join me in welcoming Mr. Vikas Kumar. Thank you, ma'am. Thank you. It's an absolute honor to be over here and join you all in this national webinar on career prospects in CSR.
thank you to HOD sir also, Professor Rutvik sir, and also my friend and professor, Mr. Piyush Porwal. I have also been talking with him about how this session should be taken on further. And I also spoke with some of your alumni and former students, what are their needs, just a need assessment from my side, so what they would like to listen. So one of your alumni, yesterday I was speaking with Shaili Patel, probably you all know which batch she was, I don't remember. But we spoke, and accordingly I tried to bring some modification in my presentation. So hopefully the time that you all are devoting over here will be fruitful, and we will have your learning, and we will have something to take away from this presentation or this webinar. So I shall start with the presentation. Just once I start with the presentations, let me know if I am audible or not. So are the presentations visible? Yes, sir. Okay, thank you. So as Professor Richie Simon has already briefed, and what I am doing currently, and what has been my education background, and what I work about. So first few slides I have just mentioned to strike a chord with my audience, because most of you are students who are pursuing BSW, MSW. Some of you would be in final years. So why we chose this profession of social work? When you read the regions that I have mentioned, maybe you can relate that there are some regions, or probably we are in the field of social work probably for the same reasons. I chose social work because it was an unconventional career, and I wanted to help people. You help people from many areas too, but this was an unconventional thing. Everyone around me was just choosing engineering and medical. So I thought, okay, let me do something different. And when I mean to say something different, it means bringing changes in people's life or impacting them positively. So this course also, has generic courses, of course, holding against them, but compared to other generic courses, it has a better return on investment. Because if you see the cost of medical degree and engineering degree, you will, if you compare it with them, you will get your answer why it has better return on investment. Also, because some of you must be coming from a very humble background where parents cannot afford to, fund you for government preparation exam, like going to Mukherjee Nagar in Delhi and preparing for UPSC, and then or for your state civil services. So these all are very taxing, if you see, as compared to social work. So social work, as compared to these career options, provides comparatively easy and comparatively strategic and fixed line where you can venture and you can build your career and support your families. Also because it allows job satisfaction, because you directly feel the satisfaction over here. You can see the result what is happening on the ground. And also because the skills that you gain during coursework or during field work, all these skills when it comes to generic fellowships or say anything which is open to common public, if you apply over there, then skills that you have gained from field are really valued over there, and you have an edge over other candidates. So these can be some of the reasons why you have chosen social work. Maybe some of you can relate with one or two reasons, but that were my reasons why I chose social. Now, when we are talking about current scenario of social work or corporate social responsibility, you can say, to be specific. So our country, it's a developing country, and we are performing quite poorly on Human Development Index. You say it, you just name it, be it literacy, be it in female ferticide, so many things. You just name it, indicator of Human Development Index, and you'll find that we are doing probably poorest, or we are ranked from the bottom. So these are, of course, not a good thing to say, but that's where that's also comes the opportunity of social work. So there is no dearth of opportunity of a social work career in field or in CSR, as I will cover in next slide, how I have devised this session. So we will specifically talk about CSR, but as I told that I will also be briefing you about some other career verticals where you can apply with a degree of social work. So how I have devised this session, it's first I will be covering it in national prospects, where I will specifically be focusing on, when I talk of government, I will specifically be focusing on CSR and also the few other verticals. Just to give you a slight introduction, this slide is about how the session will be taken further. And then we will briefly talk about international prospects. But mainly, since this session is about CSR, I will try to interact with all on this line.
So, you all know under Section 135 of Companies Act, corporate social responsibility means the voluntary contributions made by companies to a better society and a cleaner environment. So the line seems very easy, right? Very three lines, and that's what CSR is about. But there is a crux. When you say CSR, suppose that if a company is making a playground for their own employee, you are only employee, their son and their daughters can play, or only their staff can play, can that be counted under CSR? If a company, if any companies for that purpose, if it makes a hospital for their own employee where others are not allowed, or others are being charged, or they have a different rule where only their employees are allowed, and suppose they spend crores of rupees and they mention it under CSR fund, will it be allowed? Is it legal to spend those funds for their own employee? So the crux about CSR, the differences between corporate social responsibility and welfare, what welfare is, that's a very well defined in this. So where comes the role of social worker? Now you study in your courses about these things, right? Very few courses or very few professionals read about this CSR thing. There are few people who read, like chartered accountants, but they read it mainly for taxing purposes, how to save taxes or how to organize it in tax formats. But when it comes to implementing it to the ground, it's you and me, it's professional like us who go and devise the policies, projects after need assessment and necessities of the people, and we develop the project and we implement it into the ground, or we implement it through other organizations. So role of social work professional becomes very necessary in corporate social responsibility. It is a concept where companies integrate social and other useful concerns in their business operation for the betterment of their stakeholders and society in general. It's well known. But to whom this CSR applies? Any company which has a net worth of more than 500 crore rupees, or any company which has a turnover of more than 1 crore, or any company which is net profit of more than 5 crore rupees. So if any of the condition is being followed by any company, if they fall under any bracket, then they have to spend 2% of their average net profit made during the immediately preceding 3 financial year. So see, if you listen 2% seems a very meager amount. Like if you just say कि 2%, 2% ही तो खर्च करना है profit का. But some of these companies have profits in thousands of crores. So the 2% of the profit sometimes comes around 100 crore, 150 crore. Some Coal India subsidiaries, they have CSR budget of 150 crore rupees. And they are implementing it all over India. Say it hockey, say it for national games, say it for pet projects, say it for Yojana, and there are many for UPSC aspirants. So all these things that come up because they have a very huge budget, and these huge budgets of 100 crore, 150 crore for a company cannot be spent by people who do not know about the nitties and gritties of corporate social responsibility, who are not aware with the acts. We are not aware be counted into CSR and what should not be counted into CSR. Right? And even if the company has not completed 3 financial years since its incorporation, it must spend 2% of its average net profits made during the immediately preceding final year as per its CSR policy. So ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंपनी ने 3 साल कंप्लीट नहीं किया है तो आपको CSR का खर्च नहीं करना पड़ेगा. वो जो immediate previous year है उसका 2% खर्च करना पड़ता है उसमें. I have been asked to take this session in mix of both Hindi and English, so I will try to make it that way only. Also, when it comes to my company, where I come from, even if there are some loss-making subsidiaries in Coal India Limited, still they are mandated to do CSR work if according to their production. If suppose that their production is 14 million ton this year, then they will have to spend some 28 million rupees for their CSR funds. So even if you make loss, you have to spend it. There are approx 400 CPSC, Central Public Sectors and Public Sector Undertaking, and almost everyone is doing CSR. So these are just 400. I am talking about CPSC's company. Now see, all these CPSC companies, there are some Maharatna companies and Navratna companies. They are huge, giant companies. They have huge budget. As I was talking about, some companies have CSR budget of 100 crore, 150 crores, right? And also in next slide, I will be talking about how which companies are recruiting CSR professional and through which methods. But just know that it depends on you how much you can browse and look for the opportunities. You have to search for the opportunity, because today in the era, if we can look over the reels on Instagram and other places, we should also be very kind towards our own and look about the career options after
if you don't know, you won't be able to know. I will just so that's the one thing about CSR. And there are Maharatna companies like Coal India Limited, GAIL, NTPC, etc. They recruit large number of social work professionals to run their CSR programs. So not necessarily social work specialized in community development only. Some of them also hire social work specialized in HR, which I am sure your institute also specializes in some of these courses. So Coal India Limited is the first major PSU to recruit CSR professionals in large number by developing a specific community development cadre across its subsidiaries. I come from this cadre, as you would have seen on the first slide, and as Professor Richie Simon also briefed about my profile. So this is a very different cadre, as you would have heard in UPSC and civil services, that there is cadre of people like Bihar cadre and MP cadre and whatever. So in the same line, this is community development cadre, and mainly people from rural development background, or mainly people from social work with a specialization in, say, community development or URCD, urban and rural community development, or other people are also recruited in HR courses. So those of you who come from specialization of HR, they can go for HR vertical. But being specific to this community development cadre, we people do not only see CSR thing over here, because CSR almost this is a very big gulab jamun, what we say. Because CSR, there is a lot of paisa, what people say, ki if you have done MSW or BSW, you should try to go into CSR if you have to earn. Now, being very realistic, of course, everyone needs finances to sustain their families. But we will discuss opportunities beyond CSR too. Coming to community development cadre of Coal India Limited, it has about 200 executives who oversee CSR and land acquisition work of the company. And of course, as I said, most of them are with degrees in social work and rural development. Just give a brief, to give you a brief facts about how the recruitment and interviews go on. I am sure many of you must be eager. So generally, recruitment for community development cadre takes place after every 2 years. However, it's not fixed, and even the way of selection is not fixed. Earlier during our time, there was CVT, computer-based test, and post CVT there was interview. But interview has been done away with in subsequent batches. But however, you never know what management decides the next time, so you should be prepared for that also. That interview will also be there. When it comes to CVT, first paper is very generic, as it is generally in other exams, other government exams, like general studies and bit of aptitude, bit of English. But second paper will be very specific to your courses, where you will have to learn about the topics related to community development, rural development, and also a little bit about public administration. A bit about the syllabus is mentioned there online, and in case you don't find the syllabus, you can connect with me on LinkedIn or on other sites. I will share with you in case you need it. When you come and work with such companies, now there is also privilege to work. If you work in such companies, you always have your peers who also come from who also come with broad experiences, and they are from the premier institutes of the company. Some of the brightest mind you will come across if you work in the company. There is one limitation that you might face, because most of these companies, since they are mining, or say most of the PSUs, they are located in rural hinterlands. So if you are someone who is not interested in working in rural areas, this may be challenging. But I think if once we have chosen this social work, we cannot escape the fact that we need to involve with people from rural background. That's where India lies, right? We cannot go away from there. Our social work should primarily be for them, for bringing them out of poverty, or at least providing them with a dignified living standard. Now I'll slightly cover about CSR schemes of Coal India. And by saying this, I do not in any means, I don't want to promote any scheme or anything in that means. You can, of course, you can be benefited out of these schemes if some of you are eligible for. But only thing that I want you to focus is the nature of CSR schemes. These CSR schemes, what are their nature, and such schemes are being implemented by professionals like you and me.
So first one is Nirman, that is novel initiative for rewarding men's aspirants for the National Civil Services Examination. This is very recent. This is just started in January. This CSR initiative is to support meritorious candidates from its operational district. Coal India works in 39 districts across the country. So those students who have cleared the prelims of UPSC prelims or forest service examination, they will be getting assistance of 1 lakh rupees. However, their family income should not be more than 8 lakh, and they should be the residents of those 39 districts only where CIL operate. Now, see, such ideas can come from only if you are the part of the community or you interact with the people. You understand, you are empathetic with the people who are in the preparation mode. As I said in the beginning, in the very first slide, maybe many of you come from humble background where parents cannot afford you to fund your education in Mukherjee Nagar in Delhi, or say even for your online courses. It can happen. So in that cases, people like you and me understand the nitties and gritties, like what can happen, what can be the issue, what are the need, what are the necessities, and what are the policies that can be created to solve this issue or at least elevate the issue. Now, another scheme is CIL Ayushman Shiksha Sahayata, aimed at supporting children who have lost their parents to COVID-19. We all have at least known at least one or two our near or dear ones who have lost their life in COVID-19, and it was really very tough time for the country all over. And that time I was in Madhya Pradesh itself, in Jhabua itself. So every day I could see some 2 to 4 dead bodies just passing in front of my house, and it was really a very terrifying period. So now what happens is social worker, with their sense of dignity for every individual and empathy, after going into the community, they face the issues, they see what is on the ground, and accordingly they create some project if it can be funded. So in that scenario, they created this Ayushman Shiksha Sahayata so that education of children could be funded. Similarly, running and maintenance of a sports academy. After Ranchi National Games, that stadium was lying vacant and it was depreciating day by day. Then one of the Coal India subsidiary, that is Central Coalfield Limited, they came together with Jharkhand government to renovate it, and also select some talented kids from rural background or from tribal background who were interested in sports, and they started grooming them. They started paying for their education, they started training them all around, and now they are being trained all around in multidisciplinary activities, and they are bringing laurels to the country. Many of them have won medals at national and international level. Now, such is the impact of CSR. Not limited to a particular theme. If you go through CSR Act, you will know what are the things that can come under CSR. Needs. If you understand the need, then only you can relate with this CSR Act. What are the things given there and what type of projects you can bring on the table, and will that project really be useful? For that, you have to implement it or at least do a pilot study. Then there is another Yojana, Thalassemia Bal Seva Yojana, which provides financial assistance up to rupees 10 lakh to eligible patients for bone marrow transplant in 10 prominent hospitals across the country. Just look around the theme, how varied there. Sports, it is education, it is health, it is about supporting the poor people, for poor families who are unable to prepare, who are unable to fund their education. That's a wide variety of things, but for this, you have to go to the community. You have to, do the need assessment. You have to understand the necessity what is there. Without that, you cannot. That was about CSR. We will also come back if required, but I also told you I will also talk about other verticals where social work professionals can go and work. And one of them is the recent emerging trend in land acquisition, rehabilitation, and resettlement. There are very few professionals in this country who work in this area, and it's a very typical and very challenging field, because land is a very बिछेगा, इतना compensation मिलेगा, इतना rehabilitation package मिलेगा. No, they are not going to just leave that place for that sake. आप कितना भी देशभक्ति का उनको सुना दें, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है इससे. Now here the role of social workers becomes very
where they can make a balance between the country's development as well as the development of the community who will be impacted, right? So now there social work background people, mainly they are recruited for CSR, but as per needs, company also about what was there on the ground and what were the politics involved and what were the emotions of the people and what could be done for them to assuage them or at least to alleviate their pain because they were displaced College of India for another course on land acquisition. So these colleges, they have come to understand that and me they go over there because we are put in this department, land acquisition rehabilitation and resettlement department. So it is our we are being trained from there, and then we come here and train other professionals. But most of all, you have to understand that why they choose us for LA and RR and not to any other professionals. This is also a thing that should come to your mind, because when it comes to community lobbying, no one can do better than us. Of course, there can be some people with inherent skill, but when it comes to a taught skill or acquired skill, then no one can do community lobbying better than us, and to interact with community about what are the benefits they will be getting. Because we are committed to the dignity of individuals, we are committed towards the social justice. That's what social work has taught us. That's our base. So we always take into account all these things, and we never behave like someone who has been sitting on the high chairs. Rather, we come from them, we come from among them, and we have to solve their problems as and when required by being empathetic. There are some fellowship opportunities that I'll broadly I will browse upon, because I learned that a few days back your one of fellow and I also talked about. So I will just speak about 2 to 3 fellowships, which is very handsome paying fellowship, like Prime Minister's World Development Fellowship. See, these fellowships are not restricted to social work people only, but if you apply for these fellowships, you are going to have an upper hand, an edge over the other courses because of the skills that you have, because of the skills that you will be attaining during your coursework and fieldwork thing. So PMRD, you can read the slide. It has twin goals of providing short-term catalytic support to the district administration in underdeveloped, isolated, and remote areas of the country. It's a fellowship of 2 years, and selection process is generally all India competency test followed by a written test and personal interview. They pay some 25,000 rupees per month. As for my knowledge, you can check their website and other eligibility criteria if there. This is the prime eligibility criteria, but if you are interested in, you can check that. Then there is MGNF fellowship. It is also very decent fellowship. Just started 3 years back, I think. I had some friends working in this. So it is a certificate program in public policy, and it is implemented by Ministry of Skill Development. This also pays you very nicely. You start in the first year with 50K, and in next year you will be getting 60K. And in this fellowship, you have opportunity to interact with best minds of the country, sitting in the IIM classroom, learning from those professionals and from their experiences in their districts where they are posted. Similarly, there is Chief Minister Good Governance Associate Haryana and Punjab, and also in many other states. So they are basically a very opportunity wise very deep, because you come to interact with district administration directly. You are posted alone in one district, and you interact with officials about whatever your designated work is. And both these fellowships, they provide you quite handsomely around 60. Punjab, this one I think it is 20,000, and Haryana it starts with 60K. You can also look for them at their website, CMGG, and also there is PMU, Project Management Unit. Now they have mentioned it specifically in their eligibility criteria. Their candidates are shortlisted based on criteria of strength of the institution, social work done, educational accomplishment. After that, shortlisted candidates are called for interview, and general whatever their process is after interview they do. But here also, I have many of my friends working from social work background, and literally they have an edge over others, because what they will do after being selected in PMU, you people must have done it early in your college days itself. Then there are projects and programs of state government livelihood mission. At your place, it will be
Madhya Pradesh State Rural Livelihood Mission. Then there are well-known Kudum Sri and Bihar Rural Livelihood Promotion Society called Jivika. All this works on microcredit system where you form SSG and fund them with some amount and they become independent after taking loan from there and then they return the amount. That's how this all system work. Once you get into, you will learn. But these are some of the verticals where you can apply with a social work degree also besides CSR. Also, some other projects keep coming up, Jal Jeevan, Haryali. Please keep looking about this because for 1-2 years they keep coming up. In all the states they have some projects, some programs where they hire social work professional. Particularly, they mention in their eligibility criteria. Then there is Mission Ankur, Madhya Pradesh for developing Nipun professional for increasing literacy level in education and for other objectives also. Tata Institute of Social Science Knowledge Partner. It started last year itself. You can look more about it. Then there is monitoring and evaluation vertical. This is also very interesting vertical to work on, and because all the policy that comes on ground that needs to be monitored and evaluated, because monitoring saves you from the mistakes that you are going to make, and evaluation also allows you that whatever the learning from one place is, that can be replicated others, and whatever mistakes have been made at one location, that should not be replicated at other places. So monitoring and evaluation is also very important. For this, you can look at the website of Niti Aayog, that is Development Monitoring and Evaluation section of Niti Aayog. I have some of my juniors working over there, and also you can look about the social audit websites of Jharkhand, Uttarakhand, and other states where they are carrying social audit, because social audit will give you an enriching experience. स्टार्टिंग में शायद आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट ना मिले, बट द experience will be very enriching because you will be getting an opportunity to conduct public hearing and you will know what is the problem mainly on the ground, कि अगर किसी को मनरेगा का पैसा नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, बैंक अकाउंट के गलती होने से नहीं मिला है, या लोग इतने भोले हैं इसलिए नहीं मिला है, या क्या और दूसरे कारण हैं, या बीच में क्या चीज़ चल रहा है, क्यों नहीं मिला है। उसके अलावा सोशल ऑडिट में बहुत सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे मैं 14 फाइनेंस कमीशन का एक बार कर आया था, उस समय मिड डे मील प्रोग्राम जितने भी हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम सबका मिड डे वो किया जाता है। इसमें जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सोशल ऑडिट का मतलब क्या है, आप समझिए कि सपोज देयर इज ए प्रपोजल कि अ पॉन्ड हैज टू बी क्रिएटेड, जिसकी लंबाई जो है 20 मीटर हो, चौड़ाई 10 हो और डेप्थ जो है 5 मीटर हो। तो आज से 2 साल बाद जब सोशल ऑडिट होगा तो सोशल ऑडिटर जाकर उसको मापते हैं, देखते हैं कि कितना है। ऑफ कोर्स वो जो है गहराई है वो थोड़ी भर सकती है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में उतनी कमी नहीं आनी चाहिए। और उसमें जिसको पैसा मिलना था उसको मिला है कि नहीं, उसके बैंक डिटेल्स चेक करते हैं, फिर उन लोगों से पूछते हैं आपके साथ किसने किसने काम किया था। ऑल दीज थिंग्स हैपन। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इनरिचिंग करियर ऑप्शंस बियॉन्ड CSR if you want to focus on. Then of course some of you would be thinking to get into the permanent government jobs, then you can look for UPSC recruitment. Assistant Labor Commissioner, it's a very lucrative job of level 10 of pay matrix, and they just look for a degree of recognized university and a diploma in social work or labor welfare or industrial relations. So this is very suitable for you people for any specialization that you do. Please go for it if you are interested in it. It is also a great chance of promotion from assistant labor commissioner to upwards. Then there is rehabilitation officer. If you are interested working in the field of disability, you can start working as rehabilitation officer. That's pay scale and essential qualification is mentioned on your screen. You can look for it. Then NGOs and private sector, whenever we say social work, people mainly think that we work in NGOs. So this is quite well known about what NGOs are, what they do, and why NGOs are needed. So why NGOs are needed and how they mend the gap between beneficiaries and government. So NGOs serves a liaison between the government and the general public. I don't think I need to explain this. You all must be learning it in your classrooms. Some of the well-known organizations, NGOs are Pradhan, YWCA, and YMCA even. This organization, Young Women Christian Association and Young Men Christian Association. When you study about history of social work, you cannot ignore these organizations. These were the pioneer organizations from where social work started. Then organizations like Pratham, which works for education. Again, Samavesh. I worked with Samavesh during my stay in Jhabua.
They also work on education. Eklavya works on education. Ajivika Bureau, they specifically deal with migrant labor, and personally, I have been benefited out of their resources, the research work they do during my master's thesis. Then there is organization like MKS, a basic grassroots organization where you go and work with the people, you go and work with the laborer, and as a laborer, they may not pay you handsomely in the starting, or the payment may not be handsome, but if you have to learn, if you have the desire of learning what is going at the grassroots, then nothing better than that, because they were the organizations which did the groundbreaking work in RTI and MG Narega. For all the right-based acts, it was there. They have brought many right-based act with their efforts by bringing public together and going and sitting in Delhi and negotiating with the policymakers. Then in NGOs also you have opportunity to go from lower level to the higher level. And then as I was talking about CSR of government companies, similarly CSR of private companies you can choose in, because there are giant private companies like Tata, Reliance, Piramal. They have their own foundations. They do their own charity. Please look for them. Please look for the opportunities on their website. You will be in high demand if you apply for it, because that's our sector. That should not be taken by other people. That we are specialized in this. Similarly, if you are willing to work in research organizations, there are few organizations which are prominent research organizations who do only research. If you work with Sambodhi type of research organization, you can also get an opportunity to go beyond the country and work in the areas of Africa and their poverty scenario you can understand, and many other things. But there are other organizations which have independent research wing, like ASER Annual Status of Education Report. दिस इज प्रथम कि न्यूज़पेपर में कभी भी इस तरह का आता है कि हमारे चौथी पांचवी के बच्चे जो हैं वो पहली दूसरी तीसरी के मैथ और हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं. देन देयर इज ह्यू एंड ट्राई ऑल अक्रॉस द कंट्री कि व्हाट इज हैपनिंग टू द एजुकेशन ऑफ आवर किड्स, वेयर दिस कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स, right? So many things happen, but only thing I mean to say and communicate is कि such is the impact of your study, such is the impact of your research, such things you can bring on the table. And Ajivika Bureau, as I have already told, they are working for the migrant labor at the source as well as at the destination. So their research, you can also look for them. You can also look at their website for the career opportunities. Then academia, you all know, you have to clear UGC NET, and you have to score quite a good mark for achieving that JRF thing. So if you have to continue your research, if you want to continue to higher studies, you can go for this. Or of course, you are free to form your new organization. I am not a very expert in this. You will have to look for what are the requirements for forming a new organization, what are the things that need to be taken care of. International opportunities, I will just give you a brief summary what you can. If you are interested in higher studies in other countries of the world, you can look for fully funded scholarship like Channing Scholarship and Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship. One of my friend was Queen Elizabeth Commonwealth Scholar in Queen's University, Canada. So you can apply for this scholarship and you can seek help from the experts in this field, how to write a statement of purpose and other things for being selected in those. You can work in UN bodies like UNICEF, World Bank. But before going there, I think you should start working on their funded projects in India itself. Then you can have an opportunity to work with them and finally move abroad to work in the countries like Africa or even in developed countries of Europe about their projects. Then global foundations, we have Bill and Melinda Gates Foundation, Aga Khan Foundation. Of course, this list is not exhaustive. I'm just giving you an idea that you should look around these opportunities, keep searching for these opportunities, keep looking around these lines, and then you will have something better for yourself. But firstly, you have to make an effort to look for these opportunities. That was from my side for now. I am open for your. Thank you so much, Vikas sir. I request the participants to please ask your queries. You can either unmute yourself or you can post the queries in the chat box. So this time during registration, actually, we had a question and
that was regarding the prospects in CSR. What are the queries that the participants have? So from there, I would like to pick up some questions, if you permit. Yes, ma'am. Yeah. So these are coming from the participants only while filling up the form. One of the questions was, what educational qualifications, certificates, or strategies should MSW students focus on to enhance their job prospects and salary potential in CSR sector? Oh yes, actually I know when it comes to finances, everyone likes to earn handsomely, right? That's why I was focusing only on those fellowships which pay you more than 60 or 20K. So see, when it comes to degree or what type of courses you need, educational qualification, your social work background with a specialization in community development or URCD or anything, this should be enough. Because एक स्पेशलाइजेशन से हो सकता है आप एक कंपनी में ना जाएं, दूसरी कंपनी में जाएं, दूसरी में ना जाकर तीसरी कंपनी में जाएं, लेकिन ब्रॉडली अगर आप कोई सोशल वर्क का स्पेशलाइजेशन लिए हैं किसी कोर्स में तो वो इनफ होना चाहिए. Some of the courses are too specific, like disability studies, children and families, criminology and justice. So they are a bit specific. But when it comes to CSR thing, people with a community development background or URCD और सम अदर कोर्सेज, एचआर के लिए तो अलग होता है, उसमें एमएसडब्ल्यू इन एचआर तो अलग है, उसमें फिर आप एचआर में जाएंगे. लेकिन पार्टिकुलरली अगर सीएसआर में आपको काम करना है तो ये दो स्पेशलाइजेशन प्रीफर्ड है. और जहाँ तक स्किल्स की बात कर रहे थे तो द वन थिंग दैट आई केप्ट फोकसिंग ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन, यू शुड स्पेंड टाइम इन कम्युनिटी. उसको इग्नोर मत कीजिए. ऐसा नहीं है कि सीएसआर हमेशा चेयर पर बैठकर होता है. चेयर पर बैठकर सीएसआर तभी होगा जब आप फील्ड में गए हुए हैं और फील्ड को जानते हैं. अगर आप फील्ड में नहीं गए हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आप चेयर पर बैठकर भी वो काम नहीं कर पाएंगे. वो आपको किस चीज़, कौन सा प्रोजेक्ट वहाँ जाना चाहिए, उनके नीड्स हैं भी कि नहीं है, आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा. इसके लिए आपको ये आना चाहिए. ये बहुत प्रोमिनेंट स्किल है, नीड असेसमेंट. दूसरी चीज़ है प्रोजेक्ट प्रपोजल्स. आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आएंगे जब आप चेयर पे होंगे, सीएसआर में जब आप काम कर रहे होंगे फंडिंग के लिए. तो ये ज़रूरी है कि उसके पहले आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो कि प्रोजेक्ट प्रपोजल्स कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल्स में, क्या रिक्वायरमेंट्स है उस कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. हो सकता है किसी कंपनी का जो एस्पेक्ट हो वो सिर्फ हेल्थ के ऊपर फोकस करती हो अपने सीएसआर के लिए, हो सकता है कोई कंपनी सिर्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस करती हो अपने सीएसआर के लिए. तो ओवरऑल आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल्स ये आने चाहिए सेलेक्ट करने. पहले तो आप समझिए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आपको लिखने आने चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया. और धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब फील्ड में आते हैं और आप जब कोई चीज़ शुरू करते हैं, यू विल जस्ट बी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, राइट. मेनी ऑफ यू विल बी लैंडिंग इन योर फर्स्ट जॉब. जस्ट हैव ओपन माइंड, वॉट एवर विल कम योर वे यू विल लर्न. थ्रो अवे दैट ईगो दैट यू आर एजुकेटेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट और यू आर दिस और दैट. थ्रो अवे दैट ईगो. एज आई सेड इन मिडिल कि यू कम, कि हम लोग उन्हीं लोगों से आते हैं, हम कोई स्पेशल लोग नहीं है. वी हैव टू सीट विद देम. वो एटीट्यूड आप अपना छोड़कर अगर हर चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, एक एम्पैथेटिक व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला इंसान कहाँ से आ रहा है, उसको ये सोचकर काम करने की कोशिश करेंगे. जैसे अपना सोशल वर्क सिखाता है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और सोशल जस्टिस. तो अगर इन चीज़ों को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपसे गलती कम होगी और आप सीखेंगे ज़्यादा. तो कोई ऐसा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का ब्रॉडली आप ध्यान रख सकते हैं सोशल वर्क में आगे जाने के लिए, एंड स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जो हो रही है उसमें आगे जाने के लिए. Thank you, sir. There was सर, मैं राजेश्वर बात करता हूँ सर. जी बोल. सर, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर एचआर के लिए यहाँ होता है सोशल वर्कर है और सोशलॉजिस्ट भी है और साइकोलॉजी भी है और एचआरएम है और दूसरे सब्जेक्ट्स भी है. तो यहाँ पर सोशल वर्कर का कितना प्रियरिटी हो सकता है सर, दूसरा सब्जेक्ट भी रहने से सीएसआर में? देखिए, अगर आप एचआर में स्पेशलाइजेशन है, अगर आप एमबीए इन एचआर कर रहे हैं तो आप कोर्स आप एचआर के लाइन में आप जाएंगे. दूसरा, आप एमएसडब्ल्यू इन एचआर जो बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है जहां तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूं कि एमएसडब्ल्यू इन एचआर वर्सेज अदर कोर्सेज सिमिलर टू एचआर, राइट. अगर मैं ये समझ पा रहा हूं, आपका सवाल शायद यही है राजेश्वर जी. सर जी सर. ओके. तो देखिए, ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट व्यू से ज़्यादा देख रही है या उसका सोच क्या है. जैसे ऑल इंडिया की जहाँ तक बात है, यहाँ पे
MSW विथ स्पेशलाइजेशन इन HR इसको इनवाइट करते हैं, इसको मतलब एज इक्विवेलेंट टू MBA इन HR, उसमें कुछ भी अलग से वो चीज़ नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके कोर्स में HR है समहाउ, तो आप चाहे कोई भी कोर्स किए हो, अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं HR में, चाहे सोशल वर्क हो, MBA हो, या फिर आप देखिए साइकोलॉजी इकोलॉजी तो HR में उतना प्रोमिनेंट नहीं है मेरे लिहाज से। कई सारी जगह इन कोर्सेज को अलाउ नहीं करते हैं, सोशियोलॉजी को अलाउ नहीं करते हैं, साइकोलॉजी को अलाउ नहीं करते हैं, और भी आपने एक दो कोर्सेज का नाम बोला, मैं अभी याद नहीं मुझे, लेकिन इन HR भी बोला था सर, HRM। HRM व्हाट डज दैट फुल फॉर्म मीन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यस सर, यस सर। ओके, हाँ तो ठीक है, वो तो उसी लाइन का कोर्स है, तो दैट इज इनवाइटेड। लेकिन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, इवन सोशियोलॉजी को तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी अलाउ नहीं करते हैं कई सारी जगह पे, बिकॉज देयर इज ए रीजन ना। कल को तो देखिए, ये भी मैं बोलूँगा, मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, मुझे भी पता है, मैं भी सोशल साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो कंपनीज आर नॉट गोइंग टू हायर एवरीवन फॉर द सेक ऑफ एनी कोर्स। फिर तो ग्राउंड खुला हो जाएगा सबके लिए, फिर आपके कोर्स का एक स्पेसिफिक महत्व क्या रह जाएगा? जो लोग हर सेमेस्टर में एक एक महीने जाके फील्ड वर्क कर रहे हैं, और कोई है जो कि क्लासरूम में बैठे बैठे वहाँ से असाइनमेंट बना रहा है, उसमें कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। अगर कंपनी सबको बराबर ही तौल देगी तो फिर मतलब क्या है अलग अलग कोर्स का? मैं आपकी क्वेरीज को जवाब दे पाया क्या राजेश्वर जी? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। If there is any other question, I request the participants to please unmute and ask. So there is a question in the chat box by Sachin Parihar. He's asking if a company doesn't have a CSR department before and hires a fresher social worker for CSR department, how he or she can work professionally and how he or she have better learning at that particular organization or company. देखिए, पहले से कोई CSR डिपार्टमेंट उसका नहीं है और आपको अगर चूज किया जा रहा है, इसका मतलब कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, कि कंपनी ने आप में सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखा कि ये इंसान हमारी कंपनी के पॉलिसीज और इन सारी चीज़ों को आगे ले जाएगा। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट इफ़ यू आर वन ऑफ देम। दूसरी चीज़ ये है कि पीयर टू पीयर लर्निंग दैट नेवर एंड्स। आपको नहीं पता, मैं जब जॉब शुरू किया था मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्यों लिया गया है। तो आप जब एक बार उस लाइन में जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सामने खुलने लगती है, उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आपके दोस्त होंगे, उनसे पूछिएगा, उनसे शेयर कीजिएगा। लिंक्डइन इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। मैं सेमिनार करने यहाँ पे इसलिए आया कि मैम ने हमसे लिंक्डइन पे अप्रोच किया। मैं आपके कुछ लोगों को जानता इसलिए हूँ कि उन्होंने लिंक्डइन पे मुझे पिछले साल अप्रोच किया था किसी कारण से। सो वर्ल्ड इज ओपन, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और ये अच्छी बात है अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टार्ट करने के लिए। लर्निंग रेस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं आपके, लेकिन ये आपको तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। अगर कंपनी आपके ऊपर इतना भरोसा कर ला रही है कि आप ही स्टार्ट करेंगे हमारे डिपार्टमेंट को, तो Any other questions by the participants? Feel free to unmute and ask. Meanwhile, I'll just read out the second question which was there in the form. Why do many CSR initiatives focus on one-time events instead of long-term pragmatic projects? And what impact does this have on sustainable social welfare? नाइस। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सारे CSR प्रोजेक्ट्स जो हैं शॉर्ट टर्म हैं, लेकिन उसके जरूर लिमिटेशंस होते हैं पॉलिसी वाइज। इवन हमारी कंपनी का भी पॉलिसी लिमिटेशंस के थ्रू है कि इतने से ज़्यादा साल का नहीं हो सकता है, क्योंकि फंडिंग एक ऐसा इशू है ना कि अगर आपको पता है कि हमेशा के लिए ये प्रोजेक्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में एक लिमिटिंग फैक्टर है। दैट इज ऑल्सो Emmanuel, please mute. So that is also a limiting factor in itself. So people should know कि this CSR project or this CSR program is for this much year only, and people should be able, or all the stakeholders should be able to take ahead from themselves. They should be so self-sufficient in those 3 to 4 years of support that they can take the initiative further. अब जैसे CSR से आपने बोला, मैं जब झाबुआ में काम करता था यूनिसेफ के प्रोजेक्ट पे, दैट प्रोजेक्ट वाज 5 years, 5 साल का प्रोजेक्ट था। और लास्ट ईयर में हमारा मेन फोकस, अधिकतर प्रोजेक्ट का ये होता है, उस प्रोजेक्ट का भी था कि जब हम लोग उस प्रोजेक्ट से निकल रहे हैं, वहां से जब हम अपना वाइंड अप करने वाले हैं,
तो कैसे हम इंश्योर करेंगे कि वो प्रोजेक्ट्स उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे और उसमें स्टेक होल्डर्स को जो करना था वो हमारे निकलने के बाद भी करते रहें। बिकॉज सी अगर हम लोग एक लाठी पकड़ा दें उनको और लंबे समय तक करने रहनी, तो एक तरह से हम उनको ऑलरेडी मतलब उनको सपोर्ट ना करके हम एक तरह से उनको डिसेबल कर रहे हैं। वो चीज़ आप समझ लीजिए। So I don't see any drawback in this. Maybe there are some scenario, but personally I don't see any drawback in this. So there are some further questions in the chat box. How methods of social work help in CSR field? I think all the methods of CSR can help you in CSR field. You just name it, you will find the skill is being used everywhere. कोई ऐसा नहीं है स्किल नहीं है जो यूज नहीं होता है। ठीक है, आपके पास अगर एनजीओज आएंगे, अगर आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के CSR में हेड करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आएंगे तो आप उनसे प्रोफेशनल वे में पेश आएंगे ना। और उसके बाद अगर आपको पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट ये पढ़ते होंगे आप लोग, उसमें सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क और ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ते हैं, तो आप जब फील्ड विजिट करने जाएंगे, अपना मॉनिटर करने जाएंगे, इवेलुएट करने जाएंगे प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे इस स्किल्स का यूज करेंगे ना। जब स्टेक होल्डर से मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आप सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है पढ़ते होंगे, या सोशल पॉलिसी पढ़ते होंगे। तो आप नया पॉलिसी अगर कोई डिवाइस करेंगे तो नई सोशल पॉलिसी देश की क्या है, कौन से रूल रेगुलेशन है, ये सब को तो आपको यूज करना होगा। तो कोई भी कोर्स आपका, कोई भी सोशल वर्क स्किल जो है वो व्यर्थ नहीं है। आप सबको इंटरेस्ट से सीखिए और पूरे ओपन माइंडेड होके सारे ईगो को शेड करते हुए, वहीं सबसे बड़ा लर्निंग होता है हमारा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल जस्टिस। एकदम सीखने का कोशिश कीजिए और कोई दिक्कत नहीं। सर एक आखिरी सवाल जो चैट बॉक्स में है, दिस इज बाय अत्री चैटर्जी। आई वुड वांट अत्री चैटर्जी टू प्लीज इलैबोरेट because he has written, sir, is there any additional aspect that I should focus on specifically for the corporate sector? Yes, actually the one thing that I covered in slide and that I also work for, that is land acquisition thing. You know, every corporate or at least the giant companies, they are dealing with the land issues. लैंड एक्विजिशन आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली आफ्टर द न्यू एक्ट केम इनटू द फोर्स, RFCT 2013, दैट इज राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट में इतने सारे नियम में बदलाव हुए हैं एंड पीपल हैव बीन मेड सो पावरफुल, विच इज वेरी राइट, कि आप ग्राम सभा कीजिए, उनसे कंसेंट लीजिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। वी आर ट्राइंग टू एक्वायर ए लैंड फ्रॉम लास्ट 4 years एंड डेट पे डेट बढ़ रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इस फील्ड में वो लोग सोशल वर्क इंडिविजुअल, सोशल वर्क ग्रेजुएट्स जो हैं उनको वो लोग खोजते हैं, क्योंकि मैं अपने उसमें प्रेजेंटेशन में बता रहा था कि इनका जो कम्युनिटी एक्यूमेन है, कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है, जैसे आप लोग समझा पाएंगे कम्युनिटी को, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, राइट। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आप जैसे उसको बताते हैं, जैसे समझाते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देश के लिए आपकी ज़मीन जा रही है, ये हो रहा है, लेकिन कंपनसेशन कितना मिल रहा है, क्या पैकेज है और कैसे उसको आपका जो भी लॉस हो रहा है उसको भरपाई किया जा सकता है। इन चीज़ों को जब आप रखते हैं, दैट्स मच मोर एडवांटेजेस देन व्हाट पीपल ऑफ अदर प्रोफेशन डू। So please look for this thing. We will have many opportunities, and in coming years it will be a golden era. Any further questions, if anybody is having, please feel free to unmute and ask. Okay, I think that was it. Thank you, sir, for sharing your insights and experiences. Your work and contributions have provided our audience with a clear understanding of the concept of CSR, the different areas of CSR, and ways to enter into the field of CSR. Also, your talk emphasized on the different professional skills of empathy, community lobbying, communication, need assessment, critical thinking, research, and community development, which are prerequisite to work in the sector of CSR. You also focused on the importance of the blend of theory and practice of social work that helps the social work trainees in the long run. Also, for providing the participants with other employment opportunities for social work, including the fellowship opportunities. Thank you so much, sir, for joining here with us and sharing your valuable insights and time. Thank you, ma'am. Thank you. It was an honor to join you all. Hopefully, there will be some takeaway, and hopefully, I could justify the time that you all have devoted. Thank you so much. Sure, sure. Thank you. Next, I am delighted to introduce our second speaker, Mr. Hitesh Pamnani.
Mr. Pamnani is an experienced CSR professional with a robust background in social work and community development. He holds a master's degree in social work, HRDM, from Christ University and a bachelor's in social work from the Bhopal School of Social Sciences. With a rich experience as a CSR executive at KPMG, Mr. Pamnani has successfully designed and implemented diverse CSR programs. His portfolio includes 45 projects focused on education, community development, and employee engagement. He has collaborated extensively with NGOs, facilitated workshops, and spearheaded employee volunteering initiatives. We are thrilled to have him share his expertise with us today. Please welcome Mr. Hitesh Pamnani, our proud alumnus. Thank you so much, ma'am, for this kind of introduction. Okay, so good afternoon, everyone. I am Hitesh Pamnani, as ma'am has mentioned. Okay, I know it's 12 noon, that too on a weekend, we are taking a session on CSR. And it's difficult to attend all these sessions, especially on a weekend. Because when I was working in KPMG, I used to conduct sessions on Saturdays, Sundays, that too for 8 to 10 hours. So I hope this session will be a little bit more fun, okay, and we'll try to make it more interactive. Okay, so can I start, ma'am? Yes, Hitesh, please begin. Okay, so I'm just sharing my slides. Ma'am, actually, someone is already sharing the slides. Manvi Srivastav. Yeah, Manvi Srivastav, please stop sharing your phone screen. Yes. One minute. Is my screen visible? Yes, Hitesh. Yes, sir. Okay. CSR. Okay, so my slides are divided into two parts. So the very first one is the theoretical knowledge, and the other one is the practical experience. Hitesh, are you sharing the presentation right now? Because it's a folder that is visible to us. Oh, disconnected. Now is it visible? Yes, now the presentation is visible. No. Is it fine, ma'am? Yes, Hitesh, it's fine. Okay, so my slides are divided into two parts. The first one is the theoretical knowledge, where we talk about what is CSR, the legal framework, and the difference between social work and CSR. Okay.
I hope Mr. Vikas Kumar sir must have covered about the legal framework and all, right? Yes, he did. He did. Okay, so we'll start from what is CSR. Can anyone tell me what is CSR apart from the full form, that corporate social responsibility? Hello. Okay, I'll only tell. So, CSR refers to a company's commitment to operating in a socially, environmentally, and economically sustainable manner. It involves taking responsibility for the impact a company has on society and the environment and implementing practices that go beyond legal and regulatory requirements. Right. एक्चुअली जब भी मैं कोई सेशन लेता हूँ तो मुझसे बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ़ आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी, मैं अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रॉफिट्स मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मुझे सोसाइटी में क्यों कंट्रीब्यूट करना है? ओके, दैट्स द वेरी बेसिक क्वेश्चन मैनी पीपल आस्क मी। तो सीएसआर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि किसी एक्सपर्ट ने यही बताया था कि because we are using society's resources, so it's our moral duty to contribute something back to the society, right? क्योंकि हम सोसाइटीज के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम सोसाइटी में वापस कुछ दें। एंड जैसे कहा जाता है कि 2% आपको देना जरूरी है। द लीगल फ्रेमवर्क, अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि सीएसआर करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? मतलब अगर कंपनी को सीएसआर में रजिस्टर करना है तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? ओके, तो कंपनी का नेटवर्थ एटलीस्ट 500 करोड़ का होना चाहिए और मोर, या कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़ का या उससे ज़्यादा, या कंपनी का नेट प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट 5 करोड़ का इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, in the second point you can see India became the very first country to mandate CSR through its Companies Act. Hitesh, your slides are not moving. Yes, now it is on the legal framework. Are you putting it on the slide show mode? Yes. Okay, तो फिर ये सही विंडो शेयर नहीं हो रही है. You just put it on slideshow and don't put it on slideshow. I think Okay, this way ma'am. will be better. Okay. 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 So, as it is mentioned here, India became the very first country to mandate CSR through its Companies Act 2013, that too under Section 135. Okay. And it requires companies meeting certain financial criteria to spend at least 2% of their average net profits over the past 3 years on CSR activities. Students या जो भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, these lines are very important. जैसे अगर इंटरव्यू होता है तो कभी बार पर्टिकुलरली इस बारे में पूछा जाता है कि मेरा लास्ट ईयर एक इंटरव्यू हुआ था एंड आई वाज गिविंग इंटरव्यू फॉर सम कंपनी इन महाराष्ट्र, दैट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी, एंड दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि 2% काय का, मतलब 2% फर्स्ट ईयर का या कैसे क्या रहता है? तो ये मेंशन करना ज़रूरी है कि 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ओवर द पास्ट 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज। Okay. The third thing is companies that meet these criteria must form a CSR committee. एक CSR committee होना चाहिए and उनको एक लिस्ट बनानी है कि उनको किस किस चीज़ों पे काम करना है, लाइक एजुकेशन या एनवायरनमेंट या एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी हो सकता है, जैसे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके ऊपर भी आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, हेल्थ के ऊपर करवा सकते हो, फिर पॉवर्टी एरेडिकेशन, जेंडर इक्वालिटी, रूरल डेवलपमेंट।
जैसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करती है, मतलब आसपास जहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आसपास के गांव में डेवलपमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज आर कमिंग फ्रॉम दैट एरिया ओनली. Now we are gonna talk about difference between social work and CSR. ये बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल वर्क एंड CSR, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है कि ओके जो सोशल वर्क है वही CSR है. नो, बोथ आर टू डिफरेंट प्रोफेशंस. ओके, so the very first thing under this we'll talk about definition and purpose. Okay, so social work. Social work is a professional discipline that aims to enhance individual and community well-being, particularly for vulnerable and marginalized populations. Okay. The second thing is social work focuses on advocacy, social justice, empowerment, and helping people meet their basic needs through direct service, counseling, and community organizing. ठीक है, तो जैसा आप एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो तो आपको इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है. ओके, कि आप एम्पावरमेंट के लिए हेल्प करो लोगों की, फिर जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो मीट हो रही हैं या नहीं. फिर सोशल वर्कर्स आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स दैट एवरीवन नोज, एंड वी कैन वर्क ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉजेस. But on the other hand, CSR is totally different. Okay, CSR is a business practice, okay, where companies integrate social, environmental, and ethical responsibilities into their operations and decision-making processes. तो जैसे हम CSR करते हैं कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगी जो जिससे कंपनी को ज़्यादा फायदा हो, राइट. अब जब मैं KPMG में जॉब करता था तो कंपनीज का ये रहता था कि आप ज़्यादा प्रिंट आउट्स नहीं निकालो. क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है. ठीक है, आप ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज हैंडलिंग द बेंगलोर रीजन, हैदराबाद, चेन्नई, तो कभी मुझे कंपनी अलाउ नहीं करती थी कि मैं ट्रैवल करूं. ओके, हैदराबाद, चेन्नई. क्यों? क्योंकि उससे भी आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा. और हमें, क्योंकि कंपनी में आप काम करते हो ना, स्पेशली पर्टिकुलरली इन CSR डिपार्टमेंट, आपको हर चीज़ बहुत कैलकुलेट करके चलनी है. इवन आप एक प्लांटेशन ड्राइव भी करते हो तो हमें मेक श्योर करना है कि ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ ना हो, ज़्यादा वेस्टेज ना हो. ठीक है, जितने लोग आए हैं उन्हीं लोगों के हिसाब से रिफ्रेशमेंट्स होने चाहिए. तो कंपनी के लिए हर चीज बहुत कैलकुलेटिव हो जाती है, राइट. द सेकेंड पॉइंट इज द प्राइमरी एम इज टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी while enhancing the company's reputation and sustainability. Yeah. For most of the companies, CSR is a kind of marketing strategy, right? कि अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो ऑब्वियसली जैसे सोसाइटी में ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि ओ वाओ, दिस कंपनी इज डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. ओके, एंड आई विल बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंपनी ओनली, क्योंकि वो उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक, और इसमें ना कंपनी की मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, एक कंपनी की सोशल इमेज डेवलप होती है, राइट. The third point is involves activities like philanthropic donations, employee volunteer programs, and sustainable business practices. तो अब जैसे लास्ट ईयर जब मैं जॉब कर रहा था तो आई कोलैबोरेटेड विद सम NGO, ओके, एंड दे वर गिविंग सम trainings to the women drivers to drive in this electric vehicles. ओके, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि ना हम ये रिक्शास हम उनको गिफ्ट करेंगे, ठीक है, ताकि
जो वुमेन ड्राइवर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आगे जाके वो अच्छे से अपनी अर्निंग्स कर पाए। ओके, जो कि एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस भी है कि ओके मार्केट में क्या इमेज बन रही है हमारी, धीरे धीरे मार्केट में पता चला इज डूइंग दिस मच ऑफ वर्क। ठीक है, अब जैसे बॉश है या महिंद्रा ग्रुप है, तो वो ईवी सेक्टर में भी बहुत काम कर रही है और उनका सीएसआर बहुत बार ई रिक्शाज और ये सारी चीज़ें डोमिनेट करने में भी जाता है। तो इवन जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी ना, महिंद्रा ग्रुप या जो भी बड़े ग्रुप्स हैं, तो इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। The second aspect under the difference between social work and CSR is the approach. So, social work is a person-centered or community-centered approach focusing on individual needs or community development. On the other hand, CSR adopts a corporate-centric approach where activities are driven by business interests and stakeholders' expectations. राइट, CSR में क्या होता है कि आपको अपने बिजनेस के हिसाब से सोचना है। राइट, अब जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, अगर वो CSR करने लगे तो वो मोस्टली एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बायजूस। ओके, बायजूस और अन अकेडमी। ठीक है, अब क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका मार्केट एजुकेशन सेक्टर में है, तो उनकी कोशिश भी यही रहेगी कि वो CSR एजुकेशन सेक्टर में करें। फॉर एग्जांपल वो स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, लाइक जैसे कोई बहुत स्लम बैकग्राउंड से आ रहा है, ओके, और उसके पास फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उनको स्कॉलरशिप्स दे देगी। ठीक है, जैसे किसी के अगर 70% से ज़्यादा मार्क्स है ना, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कंपनी विल फोकस ऑन कि हम इसको स्कॉलरशिप देते हैं ताकि इसकी आगे की पढ़ाई अच्छे से हो पाए। ऐसा नहीं होगा कि ना जिसके 20% मार्क्स आ रहे हैं उसको भी कंपनी स्कॉलरशिप दे दे, नहीं, जो उस चीज़ के काबिल होगा, जो डिजर्व करता होगा, उसी को कंपनी वो करेगी। The second thing under social work is it uses evidence-based interventions and practices such as counseling, social policy advocacy, and group work. On the other hand, in CSR, it uses strategic initiatives that align social and environmental goals with corporate objectives such as sustainability, brand positioning, and customer satisfaction. ओके, अब जैसे आपके मतलब किसी भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको उस हिसाब से ही अपने CSR एक्टिविटीज डिज़ाइन करनी है, प्लान करनी है, आपको उस हिसाब से ही बजट्स बनाने हैं। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार एक्टिविटी कर दी और हो गया काम। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो हर साल वो बस फेस्टिव सीजन के टाइम ही काम करते हैं, है ना, मतलब मेजॉरिटी ऑफ उनका CSR उसी टाइम चलता है। जैसे दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स ना बर्न करें, हर्बल क्रैकर्स बर्न करें, ठीक है, होली के टाइम पे हर्बल कलर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कम से कम 8-10 साल काम करती है। जैसे if I'm talking about KPMG, so there's this project called Aspire, okay, and it's a 7-year long project. तो Aspire का ऐसा रहता है कि ना ये कोई भी बच्चा अगर 8th ग्रेड से 9th ग्रेड में आ रहा है, ठीक है, अगर उसके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो कंपनी उसको एक तो एजुकेशन में हेल्प करती है, स्कॉलरशिप्स देती है, प्लस एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है। जब तक वो बच्चा ग्रेजुएट ना हो जाए तब तक कंपनी उसका ख्याल रखेगी। ओके, जैसे 9th ग्रेड
उस बच्चे को 60% मार्क्स लेके आने हैं। 10th ग्रेड, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम्स वाला टाइम रहता है, तो उस बच्चे को 65% मार्क्स लेके आने हैं। 11th में अगेन 60% एंड 12th में अगेन 65%। ओके, ताकि बच्चे की ग्रोथ होती रहे साइड बाय साइड, और ये सस्टेनेबल उसमें चलना चाहिए, राइट। मतलब एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट और आई कैन से दी होलिस्टिक डेवलपमेंट 7 साल में हो जाना चाहिए। अब जैसे बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है, फीस हमने भर दी, लेकिन दूसरी चीज़ें भी आती हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसको नहीं मालूम कि कॉर्पोरेट्स में कैसे बात करनी है, राइट, या इंटरव्यूज कैसे देने हैं। तो मोस्टली वो बच्चा क्या कर, मतलब उसको हम एक एक्सपीरियंस देते हैं इस 7 साल में। तो जैसे कोई बच्चा स्लम एरिया से आता था, तो हम उसको अपने ऑफिस में लेके आते थे, और हमने क्या मेंटर्स असाइन करके रखे थे कि आप इस बच्चे को मेंटर करोगे 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। कि आपको, जैसे आप रेस्टोरेंट जा रहे हो तो आपके डाइनिंग एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, आपको कैसे बैठना है, आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जो हमारे टॉप लीडर्स हैं केपीएमजी के, तो वो इन सारे बच्चों को मेंटर करते थे टाइम टू टाइम। Okay. Now we'll talk about certain skills which are very much needed to become a CSR professional. Okay. तो because I was working in Bangalore, तो सबसे पहली चीज़ आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेटवर्किंग मीन्स जैसे आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम करेंगे, ठीक है, और आपको कोई भी एक्टिविटी करवानी है, whether it's Deloitte, PwC, Tata Group और Reliance और Infosys या इवन इन KPMG, ठीक है। ये कहा जाता है कि जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, जैसे किसी एक्टिविटी में रिफ्रेशमेंट्स की ज़रूरत है या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो आपको एटलीस्ट 3 कोटेशंस ला कर देना है हर चीज़ के। रिफ्रेशमेंट्स के 3 कोटेशंस होने चाहिए अलग अलग वेंडर्स से, ट्रांसपोर्टेशन के 3 कोटेशंस होने चाहिए अलग अलग वेंडर्स से कि क्या है, ठीक है। तो आपकी नेटवर्किंग उस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट बैंगलोर, मैं जैसे भोपाल का हूँ एंड मैं बैंगलोर में जॉब करता था, सो आई नो अराउंड 300 to 400 पीपल इन बैंगलोर इटसेल्फ। ओके, तो मेरी नेटवर्किंग उतनी स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो जैसे अगर मुझे कोई भी एक्टिविटी करवानी है तो आई कैन अप्रोच एटलीस्ट 5 to 6 वेंडर्स फॉर अ सिंगल एक्टिविटी, ठीक है। और उस कोटेशन के बेसिस पे ही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे हम जो भी अप्रूवल्स मिलते हैं कोटेशन के बेसिस पे ही मिलेंगे। आपको एक पूरा कंबाइंड कोटेशन बना के सेंड करना पड़ता था हमें CSR हेड को। दी सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, राइट। अब जैसे आई एम द को फाउंडर ऑफ एन NGO इन भोपाल, ओके, आई एम द को फाउंडर ऑफ मंथन फाउंडेशन, ओके। अब जैसे मेरे अंडर में जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, सो आई कैन टॉक टू देम लाइक, यार हर्ष ऐसे काम कर देना, ठीक है। I can just directly give them any task, okay, because those are my volunteers. या मैं किसी ने गलती की तो मैं उसको थोड़ा समझा सकता हूँ, थोड़ा डांट भी सकता हूँ कि नहीं यार ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे काम करना है। बट इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेंज होंगे, ठीक है। आपको फॉर्मली इनफॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है। There you can't order anything, order anyone. Like जैसे अगर मैं CSR एक्टिविटी कर रहा हूँ, ओके,
अब मेरी CSR एक्टिविटी में पार्टनर लेवल के लोग भी आ रहे हैं, मैनेजरियल लेवल के लोग आ रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव लेवल के भी लोग आ रहे हैं। अब मैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करूंगा? वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और बाद में वो मेरे वॉलंटियर्स हुए, राइट? तो आई कांट ऑर्डर देम कि यार अभिषेक ऐसे काम तो कर देना। नहीं, माय कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी लाइक, अभिषेक could you please handle this thing? ओके। या इवन जैसे अगर मैं किसी वीकडे पे काम कर रहा हूँ या वीकडे पे कोई एक्टिविटी करवा रहा हूँ, ठीक है, एंड आई डोंट हैव इनफ वॉलंटियर्स फॉर कंडक्टिंग दैट एक्टिविटी, तो जैसे मैं अगर ऑफिस गया तो आई विल बी लाइक कम टू दिस एक्टिविटी ना, विल हैव फन, ऐसे करके, ठीक है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को वैसे फ्रेम करना है, राइट? सोशल वर्क सेटिंग बहुत अलग होती है, कॉर्पोरेट सेटिंग बहुत अलग होती है। इवन व्हेन यू आर राइटिंग सम ईमेल्स, तो आपको वो डिग्निटी मेंटेन करनी है सामने वाले की, कि वो हर्ट भी ना हो और वो समझ भी जाए। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लीडरशिप एंड टीम वर्क, कि आपके लीडरशिप स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तब आपको लीड लेनी है उस टाइम, राइट? एक टीम के साथ काम करना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हो सकता है कि आपके टीममेट को उतना एक्सपीरियंस ना हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और कहीं ना कहीं क्लैशेस हो सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज मल्टीटास्किंग। कोई भी अगर प्रोफेशनल सोशल वर्कर है जो, एंड इफ ही और शी इज ऑल्सो इनटू CSR, he or she should know how to multitask। क्योंकि जब से मैंने अपनी सोशल वर्क की जर्नी स्टार्ट की है, तो आई हैव ऑलवेज हैंडल्ड एटलीस्ट 3 to 4 प्रोजेक्ट्स, राइट? Means even when I was in BSSS college, there was a time when I was a part of around 5 to 6 projects. So I was doing multitasking. Then when I joined KPMG, मल्टीटास्किंग उधर भी बहुत थी, क्योंकि अब जैसे सेम डेट पे बैंगलोर में भी एक एक्टिविटी हो रही है, सेम डेट पे हैदराबाद में भी एक्टिविटी हो रही है, सेम डेट पे चेन्नई में भी एक एक्टिविटी हो रही है, और आपको सारी चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी रियली गुड एट मल्टीटास्किंग, ठीक है। KPMG में भी एक साथ जैसे हम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेट करते ही थे एवरी मंथ, ठीक है। फिर द फिफ्थ पॉइंट इज एबिलिटी टू एंटरटेन। ये बहुत कम लोग अपने सेशन में मेंशन करते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अब जैसे कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाना है ऑर्फनेज में, जो इस लोग रहते हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए, ठीक है। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ऐसा रहता है कि ना बहुत सारे वॉलंटियर्स दे विल रजिस्टर फॉर द एक्टिविटी, ओके, एंड दे विल एंजॉय, राइट? एंड मतलब लोगों को बहुत मज़ा आएगा कि हाँ बच्चों के साथ एक्टिविटी हो रही है, स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, ये वो। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेम बच्चों के लिए MS Excel का सेशन कर दें, ठीक है, तो वॉलंटियर्स के लिए या जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक्टिविटी थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट विल बी अ क्लासरूम सेशन। अब क्योंकि आप चाहते हो जो आपका वॉलंटियर है वो नेक्स्ट एक्टिविटी में भी आए, और बिकॉज ये एक्टिविटी थोड़ी बोरिंग हो गई, ये एक्टिविटी काइंड ऑफ फेल्ड हो गई, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा एंटरटेन करके रख सको। ओके, मेरे साथ जैसे ये बहुत बार हुआ कि एक्टिविटीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ नेक्स्ट एक्टिविटी में आते ही नहीं थे, राइट? तो जब भी जैसे हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो क्या अगर हम बस में जा रहे हैं, तो आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ ऑल दी वॉलंटियर्स, ऑल दी एम्प्लॉयज़, कि आपको
कैसे बात करनी है, ठीक है। थोड़े बहुत मैं जोक्स करता था। आई डोंट नो हाउ टू डांस, बट मैं गाने लगा के कि आप लोग डांस करो, ठीक है। ये एंटरटेन करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। CSR में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपके हर सेशन में कितने प्रीवियस सेशंस के वॉलंटियर्स आ रहे हैं, ठीक है। नए वॉलंटियर्स बहुत आ जाएंगे, लेकिन रिपीटेड वॉलंटियर्स कितने हैं आपकी सक्सेस उसी से पता चलती है। The sixth very important skill is documentation. You should know how to document all your activities, all the things. Seventh important point is negotiation skills. अब कभी कभार आपकी किसी एक्टिविटी का बजट कम हो सकता है, जैसे एक्टिविटी का बजट 25,000 है, ओके, और जो आपने चीज़ें अरेंज की हैं उसमें 30,000 कुछ लग रहा है, 32,000 या 35,000 एक्टिविटी पे। तो यू शुड नो कि हाउ टू नेगोशिएट विथ योर वेंडर्स, ठीक है। अगर ये पुराना वेंडर है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू नेगोशिएट। अगर कोई नया वेंडर है तो उससे भी आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए कि हाँ थोड़ा इधर कम कर दो, या क्वालिटी तो बेस्ट रखनी है, लेकिन अमाउंट वाइज आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। दी एट्थ पॉइंट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या आप प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे KPMG में मैं एक साथ 3-4 प्रोजेक्ट्स मैनेज करता था, ठीक है, और दैट टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं कि एक दिन की एक्टिविटी हो गई ख़त्म, नो। कुछ प्रोजेक्ट्स 3 महीने चलते थे, कुछ प्रोजेक्ट्स 4 महीने चलते थे, कुछ प्रोजेक्ट्स 2-2 साल चले हैं, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट्स मैनेज करना आना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना आना चाहिए, बजट बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको रिसोर्सेज एलोकेट करना आना चाहिए, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, कहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर सकते हो। रिफ्रेशमेंट्स लग रहे हैं, आपको रिफ्रेशमेंट्स में क्या देना है, राइट। ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर मैं बच्चों को अम्यूज़मेंट पार्क ले जा रहा हूँ तो मैं सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट में हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करवा सकता, ओके, अदरवाइज दिल क्यू, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दी लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। आप में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की, डिसीजंस लेने की। जो भी आगे की स्लाइड्स रहेंगी मैं आप लोगों को 3 सिचुएशंस दूंगा जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है और जो एक्चुअल ग्राउंड पे चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उससे पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कैसी है, राइट। So till here we have covered the theoretical knowledge of CSR. Now we'll talk about the practical experience. So here I am giving you the very first situation. So you all have to write certain steps to conduct a plantation drive. I am giving you all 3 to 4 minutes to write down all these steps to conduct a plantation drive for any organization, whether it's the Tata Group or KPMG or Deloitte, PwC, yeah, Reliance, Accenture. So, Hitesh, they are supposed to write it in their own copies, or are they supposed to type it in the chat box? How is it? They can write it in their own copies, or they can type also. So, participants, please participate in the activity. Just take a pen and paper and write the steps. I hope there is no right or wrong here, Hitesh, right? No, nothing as such. Actually, I just want to give them kind of an experience कि कैसे corporate में चीजें चलती हैं. Okay. So imagine a situation where you have to conduct a plantation drive and write down the steps. Then we'll get some insights from Hitesh.
So you all have time till 12:38. Yes, Abhishek, are you having a question? Good afternoon, sir. Good afternoon, Abhishek. How are you? Fine, sir. Can I explain these steps, sir? Yeah, sure. Please go ahead. So, first of all, good afternoon, all of you. हम कोई भी प्लांटेशन ड्राइव किसी भी सीएसआर डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उससे करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना होता है। उसके बाद फिर हम कंडक्ट करते हैं उस प्लान ऑफ एक्शन के बाद वेन्यू जहाँ पे हमें प्लांटेशन करना है, और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने प्लांटेशन करते हैं। वो कमेटी की जो भी सीएसआर की कमेटी है वो डिफाइन कर उसमें डिस्कस होता है कि हमें 500 का प्लांटेशन करना है, 100 का, जो भी है एक अमाउंट। उसके बाद फिर ये चीज़ डिसाइड होती है कि हमें किस वेंडर से परचेज करने हैं। हमें 3 वेंडर डिसाइड करने होते हैं, उसमें से एक वेंडर को फाइनल किया जाता है, वहाँ से परचेज करते हैं। उसके बाद फिर हमें जहाँ पे लगाना वहाँ के लिए एक वॉलेंटियर टीम को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से कर रहे हैं कि वो उस लोकेशन के ऊपर डिसाइड होता है। इस तरह से हम एक प्लांटेशन ड्राइव को चला सकते हैं सर। ओके, वेरी गुड अभिषेक, आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। कैन वी ऑल क्लैप फॉर अभिषेक? ओके, Akansha has also raised her hand. ओके, यस आकांक्षा। Akansha, is that a question or you would like to answer? No, ma'am. Okay. Okay, that was by fault. Anybody else who would like to share? Ma'am, we can add on like template preparation also, like we can make a good template and a poster kind of a thing and paste and give it to, so that other people can also join, like friends, family members of the employees and the other things. And at the end, Abhishek missed the transportation and refreshment part. So we can give the cold drinks, fruity also to lower the things. And if our budget is good, we can provide t-shirt kind of a thing, just like grow more tree. Like this year theme is one tree for the mother nature, something I don't exactly remember the one. So two things that I want to add is template preparation and the refreshment or a t-shirt cap kind of a thing, so that they can other next time they can come also. Okay, thank you. Very Thank you. good, very good. That's nice. I guess Khushi had also raised her hand. यस मैम। Okay. Yes. Yes, Krishi. मैम मैंने भी स्टेप्स लिखे हैं। लाइक फर्स्ट इज पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज पार्टनर्स विथ रिलेवेंट authorities, third is select the right tree species, fourth is choose the right location, and fifth is plan logistics, and sixth is create a volunteer team, seventh is educate participants, and last is refreshment. Very good. You have also covered most of the points. Okay. Anyone else? Or should I share my screen? Okay. So, because you are working in a corporate ये खुद काम नहीं करना चाहिए, right? So firstly you have to identify the NGOs जो इस चीज में काम करते हैं, जो प्लांटेशन ड्राइव्स करवाते रहते हैं, ठीक है। उनका फिर एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा कि वेदर दे आर लीगली एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। या जिस एरिया में वो प्लांटेशन करते हैं उनके पास उस एरिया के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास परमिशंस हैं या नहीं। थर्ड,
फील्ड विजिट एंड सर्वे। आपको एक बार फील्ड विजिट करनी पड़ेगी और सर्वे करना पड़ेगा कि ओके इधर एक्टिविटीज हो सकती हैं या नहीं, ओके इधर प्लांटेशन हो सकता है या नहीं, ठीक है। आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ कोई मिनिस्टर आ गया एंड वो बोल रहा है कि इधर प्लांटेशन नहीं कर सकते। और एक्चुअल में ये हमारे साथ थोड़ा बहुत हुआ है, ओके। फोर्थ इज जहाँ हमें पता चला कि ओके सारी चीज़ें सही हैं, तो आपको एक एमओयू प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है कि एक्टिविटी तो करवानी है, कितने प्लांट्स लगवाने हैं, कितने साल के लिए उन प्लांट्स को मेंटेन करना है। अब जैसे जो मैं एक्टिविटी करवाता था, ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव्स मैंने जितनी भी करवाई हैं, तो हम जिस एनजीओ से वो करते थे कोलैबोरेट, तो हम उनको ये बोलते थे कि आपको 2 साल के लिए उन प्लांट्स को मेंटेन करना है, आपको उन प्लांट्स को वाटर करना है, राइट। फोर्थ स्टेप इज सेंड इनवाइट्स टू एम्प्लॉयज, कि अब देखिए आपको वॉलंटियर्स चाहिए। वॉलंटियर्स कौन होंगे? आपके एम्प्लॉयज, राइट। तो हर कोई तो आ नहीं पाएगा, तो आपको ना एक इनवाइट प्रिपेयर करना होता है जिसमें ना वो क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें कि ओके आई विल बी देयर फॉर दिस एक्टिविटी, ठीक है। आपके पास एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आ गई, तो आपको उनको कॉन्फर्मेशन मेल सेंड करना है कि कब एक्टिविटी होगी, कैसे होगी, क्या करना है और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। साइड बाय साइड यू हैव टू स्टार्ट अरेंजिंग द रिफ्रेशमेंट्स कि इस दिन एक्टिविटी है, मुझे एक्टिविटी के लिए ये रिफ्रेशमेंट्स ले जाने हैं। हैवी मील नहीं होना चाहिए, लाइटर मील होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, लंच करवाना है नहीं करवाना है, ब्रेकफास्ट करवाना है नहीं करवाना है। फिर रिफ्रेशमेंट्स का कॉस्ट कितना आएगा, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ पर पर्सन या 100 रुपीज़ पर पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द बजट, ओके। देन यू हैव टू अरेंज द ट्रांसपोर्ट, कि आपके ऑफिस से डायरेक्ट वॉलंटियर्स को ले जाओगे उस फील्ड पे, या कुछ वॉलंटियर्स डायरेक्टली पहुंचेंगे जहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव होनी है, कैसे क्या है ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। इसके लिए आपको अगेन एक और कॉन्फर्मेशन मेल सेंड करना पड़ेगा आस्किंग दी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स और वॉलंटियर्स कि आप डायरेक्टली पहुंचोगे या इनडायरेक्टली पहुंचोगे, मतलब ऑफिस बस से आप आओगे या डायरेक्टली आप अपने ओन व्हीकल से आओगे। अकॉर्डिंगली आपको बसेस अरेंज करनी है, ठीक। फिर एक्टिविटी के टाइम आपको अटेंडेंस लेनी है, फोटोज क्लिक करने हैं, देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट द एक्टिविटी। बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, आप एम्प्लॉयज को थैंक यू ईमेल्स सेंड करोगे, ठीक है, कि थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। देन यू हैव टू टेक द फीडबैक्स, देन यू हैव टू रेज पीओज। पीओज मतलब परचेजिंग ऑर्डर्स, है ना, क्योंकि एक्टिविटी हो गई, आप पेमेंट भी करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड लास्ट इज मेक पेमेंट टू ऑल द वेंडर्स। बीच में मैंने 2-3 पॉइंट्स मिस किए हैं, राइट, क्योंकि जो जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें यह रहता था कि जैसे हम पीओज रेज करते थे ना, हमारा 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता था, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पीओ रेज कर रहा हूँ, तो पहले मैं मुंबई की टीम को भेजूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि ओके ये राइट अमाउंट का पीओ रेज हुआ है या नहीं। उन्होंने चेक किया, मुंबई की टीम दिल्ली या गुड़गांव की टीम को वो पीओ सेंड करेगी अगेन चेक करने के लिए कि ये सही से चेक मतलब रेज हुआ है या नहीं। उसके बाद दिल्ली की टीम अप्रूव करेगी, अप्रूवल के बाद मुझे पूरा सिस्टम में पीओ रेज करना है, एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, कितने वॉलंटियर्स आए और पर वॉलंटियर का कितना खर्चा हुआ, ये वो सारी चीज़ें। तो हर कंपनी का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं आपको केपीएमजी का इजीली बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उधर काम किया है, ठीक है। किसी कंपनी में हो सकता है कि सिर्फ 2 स्टेप्स हो वेरिफिकेशन की या पीओ रेज करने की। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड सिचुएशन। ये इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज यू आर अ न्यू जॉइनर एंड यू आर आस्क्ड टू अरेंज एटलीस्ट 30 volunteers for the upcoming activity within half an hour, what will be your approach? Okay, तो कोई अगर आंसर करना चाहे,
मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स. जैसा आपका आज फर्स्ट डे है किसी भी कंपनी में और आपको बोला है कि हाफ एन आवर में 30 वॉलंटियर्स अरेंज करने हैं. आप किसी को जानते भी नहीं हो, आप कैसे अरेंज करो? Sir, we will take the help of higher authority, like we will convey them to ask them to arrange a meeting for us, and once like in a after lunch or some period, a short meeting kind of a thing, and then give a notice informal notice to everyone in our office to get arranged in some hall kind of a thing or a conference room, and then there we can tell them about the this thing, introduce ourselves like this is the first day and this task is given to us, so we need volunteers and this is going to be our plan, some rough kind of a structure, because this is the only way we can talk to so many peoples. Otherwise one to one is not possible for the first day in tenure or joining. Okay. It's good to know that you will be able to arrange at least 30 volunteers for the activity on your first day. That's great. Anyone else? I think the situation is very critical that you have posed here. Man, this was the interview question. Participants are also thinking now, how? So, what was your answer then? Okay. So my answer was, okay. First, I'll ask my manager to give me a list of all the head of departments with their email IDs. And then I'll draft a mail and I'll send it to all the departmental heads. Okay. Means I don't know anyone in the company as of now, right? Firstly, I'll introduce myself to them कि मैं हितेश पमनानी हूँ, ये है वो है, ठीक है, और हमारी एक एक्टिविटी आ रही है और मुझे वॉलंटियर्स चाहिए. तो आप क्या डिपार्टमेंटल हेड्स की जो टीम होती है वो बड़ी होती है, तो दे कैन इजीली सर्कुलेट इन देयर टीम्स, राइट? एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अरेंज द वॉलंटियर्स. ओके, ये सबसे पहली स्टेप होगी. ठीक है, अगर आपके वॉलंटियर्स ऐसे ही अरेंज हो गए कि हाँ डिपार्टमेंटल हेड्स को ही आपने डायरेक्टली भेज दिया एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग यू कि हाँ हमारे 15 लोग आ जाएंगे हमारे डिपार्टमेंट से, या इस डिपार्टमेंट से 20 लोग आ जाएंगे, या इस डिपार्टमेंट से 10 लोग आ जाएंगे, तो आपका ये काम पूरे हार्डली 10 to 15 मिनट्स में ये वाला काम हो जाएगा. फिर मैं एक पुरानी लिस्ट निकालूंगा. ठीक है, आई आस्क माय मैनेजर कि जितने भी लोग जो रेगुलर वॉलंटियर्स हैं मुझे उनकी लिस्ट चाहिए. उन लोगों के मेल आईडीज निकालूंगा मैं. मेल आईडीज को कॉपी करके आई विल ड्राफ्ट अनदर मेल बिकॉज यू गाइस आर द रेगुलर वॉलंटियर्स, सो वुड यू लाइक टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वॉलंटियरिंग एक्टिविटी. ठीक है, क्योंकि रेगुलर वॉलंटियर्स बहुत कम बार मिस करेंगे वो एक्टिविटी का चांस, राइट? सो दैट वाज माय आंसर. द वेरी फर्स्ट थिंग कि आप डिपार्टमेंटल हेड्स को डायरेक्टली अप्रोच कर दो, ओके, ताकि इजीली वॉलंटियर्स अरेंज हो जाए. इवन और ये एक्सपीरियंस थैंक्स टू द सोशल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ BSSS कॉलेज. ये एक्सपीरियंस मुझे सोशल वर्क डिपार्टमेंट से आया है BSSS कॉलेज के. एंड क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन Ritvik sir asked me to arrange some volunteers. Okay, then I started targeting some groups कि हाँ इस ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं, तो अगर मैं इस इंसान को कन्विंस कर लूँगा तो इसके साथ 8-10 लोग और आ जाएंगे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. और जो वो प्रोजेक्ट था जो मैंने BSS में कोऑर्डिनेट किया था, हाफ एन आवर में आई ऑलमोस्ट अरेंज्ड 20 to 25 volunteers because of this approach only. So that experience helped me to get into KPMG. Okay, now we'll talk about the third situation. Despite having made all the necessary arrangements for the plantation drive, on the day of the event, you received a call from the NGO informing you
that due to heavy rainfall the previous night, conducting the activity might be challenging. If the activity proceeds, the volunteers or the employees may need to walk barefoot in the field to plant the saplings. इस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? एंड प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपने सारे अरेंजमेंट्स करके रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके रखा है, रिफ्रेशमेंट्स भी अरेंज्ड है, और सुबह आपको कॉल आता है कि ये चीज़ हो चुकी है. What will be your approach? Any answers? Means you have two options. You can conduct the activity or you can't conduct the activity. Means it totally depends on you. आप एक्टिविटी कर सकते हो, आप एक्टिविटी नहीं भी कर सकते हो, और आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है बिकॉज प्रीवियस नाइट हैवी रेनफॉल हुआ जो कि आपके हाथ में नहीं था, और जहाँ पे आपको एक्टिविटी करवानी थी तो सिचुएशन चेंज हो गई. Yes, if any participant would like to answer this situation. Sir, we can again draft a mail regarding the same and inform this. And like, not everyone is not having the problem in walking barefoot. Even people enjoy these things sometimes. So we can voluntarily ask and tell about the situation. Who are those who are interested and willing to do the same in this condition, or we will arrange for the some boot kind of a thing. Like it's not feasible only because it's again at 2 hour web budget. And arranging shoes at the last moment, like with that खेत वाले जो जूते आते हैं, I don't know what we call them. And that was a good answer. Okay, anyone else? देखो एक हिंट दे सकता हूँ मैं, इसमें आपके लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगे, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ जाएंगे, सारी चीज आ जाएंगी. Honey has raised hand. Okay. Please proceed, Honey. हेलो सर. Yes, Honey. सर माय नेम इज हनी मीना. सर मेरा आंसर ये है कि जो आपने पहले प्रोसेस बोले थी कि हम वॉलेंटियर कैसे बनाएंगे, तो उसमें एक मेन चीज ये थी कि हमें उस वॉलेंटियर की जो टीम थी उसमें हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना जरूरी होता है, तो हम उनसे कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि मेल सब कुछ हर कोई मेल नहीं देखता है, लेकिन कम्युनिकेट अगर व्हाट्सएप पे होता है तो वो जल्दी करते हैं. तो जो आपने अभी सिचुएशन दी कि हमें जहाँ लोकेशन पे जाना था और हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर देंगे. ओके. सो हनी, ये दोनों सिचुएशंस दोनों अलग हैं, ठीक है. सिचुएशन 2 वाज अ टोटली डिफरेंट केस एंड सिचुएशन 3 इज अ टोटली डिफरेंट केस. ओके. और जैसे इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट यू हैव टू बी मोर एक्टिव ऑन योर ईमेल्स. यस सर. ओके. क्योंकि आपको मोबाइल नंबर्स इजीली नहीं मिलते हैं, राइट? And it is easy to copy paste the emails and draft a mail and send it to everyone. Right? Making a WhatsApp group is difficult because I have done that. Okay. Okay, sir. Anyone else? But then Honey's answer I could not understand whether he will continue with this activity or what is the course of action. Supposing you are having a WhatsApp group, then what are you going to do? सर माय आंसर इज, अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ किसी सिचुएशन को लेके कि मैं कुछ आगे एक्टिविटीज करने वाला हूँ, तो मैं जब मेरे पास वॉलेंटियर की एक लिस्ट आ जाती है तो मैं उससे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ. लेकिन कुछ सिचुएशन के बाद हम उस लोकेशन पे नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़, तो हम वहाँ मैसेज ड्राफ्ट कर देंगे कि ये सिचुएशन हुई है, उस वजह से हम यहाँ पर ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. Okay. So let me answer this question or this situation which I have put in here. ये लास्ट ईयर 8 सितंबर की बात है. ओके. एंड
I'm gonna tell you a story kind of a thing. Okay, और ये सिचुएशन मेरे साथ एक्चुअल में हुई है, राइट? तो जहाँ पे हमें एक्टिविटी करनी थी वहाँ पे यूजुअली उतना रेनफॉल नहीं होता है. ओके, अब लेकिन बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस एक रात पहले बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ एंड इट वाज very difficult to conduct that activity in that area, and I was conducting this activity for the HR department, right? The thing is, जैसे HR department के लिए मैं एक्टिविटी करवा रहा था, इस एक्टिविटी के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टनर लेवल के लोग आ रहे थे, मैनेजर्स आ रहे थे, एंड देन देयर वाज सम एट असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल. Okay, so you have to think about them also. So last year, I got a call at 7:30 in the morning from the head of HR department that Hitesh, because of heavy rainfalls in that area, I got a call from the organizer saying that it will be kind of difficult to conduct this activity in that area. Okay, and if you want, we can cancel this activity. मैंने क्या बताया, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर चुका हूँ. ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं एक्टिविटी करवा रहा हूँ या नहीं भी करवा रहा हूँ, मुझे अमाउंट देना है. रिफ्रेशमेंट अरेंज हो चुके हैं, मैं करवा रहा हूँ एक्टिविटी या नहीं करवा रहा हूँ, मुझे अमाउंट पे करना है, राइट? आई कॉल्ड द ऑर्गेनाइजर्स, आई आस्क्ड हिम व्हाट इज द सिचुएशन एंड is it possible to conduct the activity. So he told me we need to install at least 3 to 4 pumps in that area, कि हम पूरा पानी निकाल लें उस एरिया में से. ठीक है, बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डे माई मैनेजर वॉज ऑन लीव. आई आस्क्ड द ऑर्गेनाइजर कि ओके इंस्टॉल दी पंप्स और पूरा पानी आप निकाल दो उस एरिया में से. ओके, देन मैं by 8:30 I reached the office. I went up to this HR department. The HR had asked me whether it is possible to conduct the activity or not. Okay, because the partner level people are coming. Okay, and I have to think about the employees also. So I told them it is means we can conduct the activity, and anyhow I have paid the amount to the transportation people, to the vendor. The refreshments have been arranged, and it is going to cost me a lot. Because the means department को बहुत बड़ा नुकसान होगा. Okay. Then I motivated them. I gave some kind of orientation and kind of a speech. कि anyhow I'll be going in that area. I'll plant all the samplings. I don't have any problem. If you guys want to join me, you can join. Or if you don't want to join, you can just sit in the office. It won't be a problem for me. Because I was very confident about this activity. Everyone agreed कि okay हम ये activity करना चाहेंगे. And by 1:30 we went to that area. हमने वो activity की. And you won't believe, HR department ने इतना enjoy किया इस activity को. And they were asking to stay for more time. They asked me to conduct some other activity like this only. Okay, तो इसमें आपके क्या डिसीजन स्किल्स आते हैं, डिसीजन मेकिंग आप कैसे करते हो. ठीक है, आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखनी है कि एक्टिविटी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती. प्लांटेशन ड्राइव, दैट टू इन बैंगलोर में कभी भी बारिश हो सकती है. ठीक है, लेकिन आपको हमेशा लीडरशिप दिखानी पड़ेगी. बिकॉज एम्प्लॉयज आप पे ट्रस्ट करते हैं, राइट? द मेन पर्पस ऑफ टेकिंग दिस सेशन वॉज कि आपकी एक थिंकिंग डेवलप हो कि कॉर्पोरेट्स में कैसे काम किया जाता है, और अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, राइट? मतलब गेटिंग इनटू CSR इट्स काइंड ऑफ इजी. मतलब आप CSR में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन CSR में डिपार्टमेंटल हेड्स को ले जा रहा हूँ तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी करवाओगे आप सही करवाओगे, राइट? तो दिस वाज सिचुएशन 3.
And these are few interview questions if you are giving an interview. So the very first question most of the companies ask, why social work, legal framework of CSR, and what are SDGs, Sustainable Development Goals. You can search about SDGs. मैम मेरे पास थोड़ा बहुत और टाइम है और if I can take 5 more minutes. Yeah, sure. That's possible. Okay. So जैसे you must have heard about Deloitte. तो डेलॉइट की एक ओपनिंग आई थी CSR की एंड जैसे बहुत लोग क्या करते हैं जब भी कोई भी CSR की अपॉर्चुनिटी आती है लोग सेम रेज्यूमे सेंड कर देते हैं और दे अप्लाई थ्रू सेम रेज्यूमेस कि हाँ ये एक रेज्यूमे बना के रखा है तो ये मैं भेज देता हूँ ठीक है और बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अप्रोच मोस्टली लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है ठीक है तो मैं आप लोगों को बस एक रेज्यूमे दिखा रहा हूँ कि अगर आप रेज्यूमे बनाते हैं तो आपका रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए Can you all see my screen? Is my screen visible? This is on the same presentation. Okay, 1 minute. Okay. Now is it visible? Yes, now it's visible. Okay. Okay. Right. Okay. All right. I suppose, Hitesh, you are done with your talk. Yes, ma'am. Right. I encourage the participants to please ask any questions. If you have any, please feel free to unmute yourself and ask the queries, or you can post your questions in the chat box. Meanwhile, as the questions are coming, like I already informed this time in the registration form, we had a question for the participants to actually pose in queries prior the session. Okay. Some of them are in line with MSW HR. So I would like to ask you, if you permit. Yes, ma'am. Please. Yeah. So the first question was, what role does a social worker play in CSR, and how can MSW HR students align their learning with the expectations of CSR roles? Okay. So the thing is, many a times people ask me this कि MSW HR करने के बाद CSR में करना ज़्यादा easy है या MSW community development करने के बाद CSR में जाना ज़्यादा easy है. तो in my experience, I would suggest कि जो MSW HR कर रहे हैं उनके लिए CSR में जाना ज़्यादा easy है. Because when you are completing your post graduation, okay,
you'll get some kind of experience in the corporate culture. Okay, and most of the times when you are conducting the CSR activities, it is considered as the employee engagement activities. Yeah, I told you about the difference between social work and CSR. Okay, so when you are entering in the corporate world, yeah, for first two internships you can do in NGO sector, not a problem, and expose yourself to social work in the first two internships. Okay, but when you are entering into corporate, uh, you should know how to conduct the activities with the employees, with the help of employees. ओके, तो जैसे मैंने क्या बताया कि सोशल वर्क में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है. हियर यू विल काइंड ऑफ ऑर्डर योर वॉलंटियर्स, ठीक है, बट इन कॉर्पोरेट सेटिंग यू हैव टू बी मोर प्रोफेशनल, और आई कैन से दैट यू हैव टू बी फॉर्मली इनफॉर्मल इन योर कम्युनिकेशन. ओके, यू कांट ऑर्डर देम. ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए. नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, हाँ, एनजीओ सेक्टर में आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो सकती है बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर कंडक्टिंग डे टू डे एक्टिविटीज एंड ऑल. ओके, this networking will help you getting into CSR and conducting activities for the corporates. Okay, in corporates you can take the help of the admin cell because वो बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करवाते हैं, लॉजिस्टिक्स अरेंज करवाते हैं, इवन होटल्स अरेंज करवाते हैं अगर कोई ट्रैवल कर रहा है एम्प्लॉय, ठीक, यू कैन टेक देयर हेल्प. ओके, सो दीज आर सर्टेन स्किल्स, स्पेशली द कम्युनिकेशन पार्ट. The things you will learn while working in an NGO and the things you will learn while working in a corporate, both are very different. Your communication skills matter too much. Okay, here I was an executive. I used to interact with the partner level people. I can't be like सुनो आ जाना इस एक्टिविटी पे, no. ठीक, I can be like, hey please come for this activity now. This activity is really good and you'll enjoy, and ask your department people to come for this activity, right? So I'll suggest you all, if you are entering into CSR, start your journey from a corporate setting. Okay, means that was my experience. Okay, but if you are starting from community development, it's also fine, not a problem. Yes. Hitesh, there is another question in the chat box by Subrata Khan. So, what are the most effective ways for students to stay updated on CSR trends and opportunities? See, the thing is, most of the time when I started my professional journey, I was not getting job into CSR. I was getting some job opportunities in the HR setting. Okay. Most of the time, the thing is, companies won't post anything about the CSR jobs. Okay, there will be some third parties. Okay, if you also, you all must have downloaded this Naukri application. Many a times you must have find that a company's CSR का कुछ नहीं डालती. There will be some third party who will ask for CSR things. Okay, some consultancy firms and all. Okay, then there is this website CSR jobs. You can check that. Naukri is there. DevNet jobs पे भी आप search कर सकते हैं. नौकरी पे mostly NGOs भी post करते हैं CSR के लिए. तो you have to decide whether you have to enter in the NGO sector or the corporate sector. And if you are talking about trends, you need to interact a lot. You need to interact with a lot of people. Okay, जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं, डेलोइट हो गई, KPMG हो गई, या रिलायंस हो गई, टाटा ग्रुप्स हो गए, ठीक है. क्योंकि इन माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत कम लोग मुझे CSR के मिले, ठीक है. इवन KPMG is a very big company, but we had a team of around 11 people only, all over India. Only 11 people were there. Okay, and only 2 people were looking after the South region, my manager and I. Okay, so firstly, it's difficult to find out the people who are working professionally, working into CSR.
Okay, that too in a corporate setting. Okay, you can also look out for लिंक्डइन लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं. हाँ, आप CSR के बारे में सर्च कर रहे हैं तो you should search for corporate social responsibility, not CSR, because many a times you'll get calls for customer service representative. Okay, and there is one more term nowadays many corporates use. It's corporate citizenship. Let me type it here. You should also search for corporate citizenship. ओके, जैसे एक्सेंचर पे कॉर्पोरेट सिटीजनशिप वर्ड यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. इवन KPMG भी बीच बीच में कॉर्पोरेट सिटीजनशिप ही यूज करती है. तो या फ्रेंड्स के लिए यू नीड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. Thank you, Hitesh. Any further questions from the participants? Otherwise, we will be starting with the last question now. There's another question, Hitesh, from the form, which I would like to read out. How does CSR intersect with human resource management, and what CSR related job positions are relevant for HR students or graduates? That's a very good question. So I've previously mentioned that conducting employee engagement activities. If you enter into employee engagement activities, you can do CSR, because in corporates you are most of the time you are conducting employee engagement activities only, because your volunteers will be your employees. Okay, जैसे HR डिपार्टमेंट के लिए मैंने वो करवाया प्लांटेशन ड्राइव. ओके, so that was kind of an employee engagement activity plus CSR, right? Conducting sports event for audit department, क्रिकेट मैच करवाया तो उनके लिए तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी है ना. एंड HRs कैन एंटर इनटू एम्प्लॉय एंगेजमेंट पार्ट ऑफ थिंग कि हाँ, अगर हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट में जा रहे हैं पर्टिकुलरली, देन दे कैन इजीली एंटर इनटू CSR थ्रू HR. Okay. Thank you, Hitesh, for sharing your insights and experiences at KPMG. During your session, you focused on the legal aspects of CSR, difference between social work and CSR, the benefits of CSR for company and society at large. You emphasized on the set of skills, some unique ones like multitasking, ability to entertain, and some crucial ones like networking, project management, budgeting, documentation, negotiation, etc. You also used cases for making your sessions engaging and sharing important tips while applying to jobs in CSR. As we near the end of the enriching webinar, I want to extend my heartfelt gratitude to Mr. Vikas Kumar and Mr. Hitesh Mamnani for their valuable time and insights. I also thank the college management, Dr. Father John PJ, Principal BSSS, Dr. Sister Sonia Kurian, Vice Principal BSSS, Father Jomi Panathas, Dean of Academics, Dr. Ritvik Gandhe, HOD Social Work, for their leadership and continuous support. I thank my team members, Dr. Ritvik and Mr. Piyush Porwal, for their continuous engagement, which made this event a success. I thank all the faculty members of social work for their presence and each and every participant for joining us with full activeness and curiosity throughout the webinar. We hope today's session has provided you with a clearer understanding of career prospects in CSR. Thank you to all the participants for joining us and contributing to this fruitful discussion. The feedback form for the webinar is shared in the chat box. All the participants are requested to fill the feedback form, as this information will be used to create your certificates, which will be issued in a week's time over your email. Have a wonderful day ahead, and we look forward to seeing you at our future events. Stay safe and stay inspired. I hereby conclude the event. Yes. Richie ma'am, can we, Piyush and Hitesh, all cameras on, and whosoever is available online, Vinesh sir, if we all can open the camera just for a screenshot photo. That would be nice. I would request Piyush sir to please click the picture, if that's possible from his end.
all the faculty members here and all the students of department who are online right now can turn on their cameras, please. Okay, done. Thank We are you so done. much, sir. Thank you so much, ma'am, Thank you, Piyush, sir. for Thank you. allowing me to take up this session. Thank you so Thank you. much. No, no. Have a great weekend, Great, everyone. This session Same. is over. Same to you. Okay. Thank you. Thank you once again. We'll Thank you. keep Yeah, please, please. we'll keep the meeting on for a few more minutes so that the participants can fill the form before exiting the meeting. Thank you once again. Thank you.